Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. This is your maths lecture of grade 3rd and I am your maths teacher Aparna Pandey from DPS Lamachor. So beta, as you all know that this is our maths lecture and here we have already started our chapter number 9. Here we have already started our chapter number 9. How many times? Okay, we have already started our chapter number 9. How many times? Almost many important things related to this chapter we have discussed in previous 2 parts of this chapter. Okay, but few things are left, so that I am going to explain you now in this video. As we have started this chapter, but due to your half yearly examinations we have to do our revision, so then I have given you revision video. That's why the continuation of this chapter was not there. So from today again we are going to discuss same chapter. So no need to get confused. If you are not able to continue from this video, so kindly go in previous links related to this chapter. 2 links are there. You can go there and then you can connect yourself again to this concept, that is how many times. In this chapter beta, I have already explained you that when we have to calculate something of same objects, and suppose we have same object and their number are similar, so instead of adding them again and again, we have some easy method to find the answer or to calculate the number. मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमारे पास कोई सेम ऑब्जेक्ट के बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे सेम ऑब्जेक्ट के हमारे आइटम्स हैं एंड वी हैव टू कैलकुलेट कि टोटल में कितने हैं, तो इंस्टेड ऑफ एडिंग देम अगेन एंड अगेन, इंस्टेड ऑफ डूइंग रिपीटेशन एडिशन, बार बार ऐड करने से, रिपीटेशन एडिशन करने से, वी हैव वन इजी मेथड टू फाइंड द total number and that is multiplication. This I have already explained you कि वो हमारा method होता है multiplication का. And after that I have told you that for doing this chapter the most important thing for you that you have to learn tables. If you are not learning tables, so you will unable to solve this chapter. Simply I am saying that you will be unable to solve, because for doing multiplication, the prior condition is that you must have learned tables. Okay. Then in this chapter, I have told you many methods how to write the particular number. Suppose I have told you that 2 times 5 is. Then we can write it as 2 into 5 is. Then both have the same answer 10. ये चीज मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में सिखाई है. सपोज आई हैव टू राइट 2 times 5, so it means 5 plus 5. We can do like this, and we can write same thing as 2 times. We can write, suppose it is given 2 times 5, then we can write 2 times 5 like 5 plus 5, and one more thing we can write 2 times 5 is equals to 2 into 5, and if we are calculating the both things, what we are getting 10. What we are getting 10. तो आप 5 plus 5 काउंट करने से, if you know the table, 5 into 2 is simply 10. So it is the best way to find answer. This I have explained you. Similarly, if I am converting it like 5 times 2, अगर मैं इसे 5 times 2 कर दूं, then how you will find 5 times 2? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा 5 times 2 के लिए? We have to write this 2 5 times, means 1, 2, 3, then 4 and then 5. It means 5 times 2 means 1, 2, 3, 4, 5. Then further you will do addition and then you will find the answer. But we have another better way to find the answer, that is we can write this 5 times 2 into 5 into 2, and simply we are getting answer 5 into 2 10. And if you are going to add this 2 plus 2 4, 4
plus 2 6, 6 plus 2 8, 8 plus 2 10. So again we are getting 10. It means that I have told you that we can write particular number like this also, like this also, and like this also. But instead of doing this repetition addition, ये बार बार add करने से it is very easy to do multiplication and find the number. But this multiplication is only possible if you know the tables. This all we have discussed in our previous video related to this chapter. Now in today's video I am going to explain you how to do the word problems. Though I have explained this prior also, but many students are getting confused, so I am going to explain the same again. Okay. Now beta, here you can see we have one word problem. What it is? A shirt has 5 buttons. How many buttons would 3 shirts have? अब ये हमसे पूछ रहा है कि हमारे पास एक शर्ट है जिसके 5 buttons हैं. We have one shirt which is having 5 buttons. So how many buttons 3 shirts would have? तो 3 shirts के पास कितने बटन होंगे? फिर से समझिए. The question is asking that we have one shirt and on that shirt 5 buttons are there. And the same type of we have more 2 shirts and they were also having 5 buttons. So now you have to calculate the total number of buttons in these 3 shirts. Okay. अब देखिए, we have 2 options. First you can see here that I have drawn here 3 shirts. Okay. 1, 2, 3. These 3 shirts have buttons. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. These 3 shirts have 5 buttons. Okay. Now, अब हमें ये पता करना है कि ये शर्ट्स में हमारे टोटल बटन कितने हैं. 1 शर्ट का उसने हमें बता दिया, 3 शर्ट्स का उसने हमसे पूछा है. अब जरा सा रिलेट करिए प्रीवियस वीडियो को, where I have explained you that if in question they have given you information related to one item and they are asking you for more than one item, then what we have to do? I have told you in previous video, मैंने आपको समझाया था ना कि जैसे अगर हमें किसी एक आइटम के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और हमसे सेम आइटम के ज्यादा नंबर्स के बारे में पूछा जाएगा, तो व्हाट वी हैव टू डू? हमेशा हमें क्या करना होता है? मल्टीप्लिकेशन. ऑलवेज वी हैव टू डू multiplication. I have told you this previously also that when information about one item is given and they are asking about more than one items, then we have to do multiplication there. तो यहाँ से हमें एक चीज तो इस वर्ड प्रॉब्लम से क्लियर हो जाती है that we have to do multiplication. वो कैसे? Because in this word problem they have given information about one shirt and they are asking to us about 3 shirts. Okay, यहाँ पे इंफॉर्मेशन 1 शर्ट से रिलेटेड दी है और 3 शर्ट्स के बारे में पूछ रहे हैं. So that we have to see. So यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई that we will do multiplication. Another thing is that 1 शर्ट में 5 buttons है, 3 shirts के बारे में पूछ रहा है. अब आप देख सकते हैं I have already drawn 3 shirts here and each shirt contains 5 buttons. अब ये पूछ रहा है कि जब 1 shirt में 5 button है, 3 में कितने होंगे? So you have simply 3 shirts and each shirt contain 5 buttons. आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं. लेकिन This is how many times. हमें यहाँ पे काउंटिंग नहीं करनी है, रिपीटेड एडिशन नहीं करना है. This only I have told you कि हमें रिपीटेड एडिशन नहीं करना है. हमें क्या फाइंड करना है? हमें इजी मेथड फाइंड करना है जहां से हम डायरेक्टली आंसर ढूंढ सकें. Either this is very easy. आप इन सबको काउंट कर लीजिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. And what answer we are getting? 15. Simply we can say that 3 shirts have 15 buttons.
What we have done here? We have done addition. लेकिन हम addition नहीं करेंगे. What we have to do? We have to do multiplication. इस चीज को सब समझेंगे. चलिए, how we will do now? A shirt has 5 buttons. How many buttons would 3 shirts have? So what we can say? Number of button in one shirt. Number of buttons in one shirt. Or we can simply write one shirt have 5 buttons. आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, number of buttons in one shirt 5. Or you can write it like this also. One shirt have 5 buttons. एक शर्ट के पास कितने बटन हैं? 5 buttons हैं. In both the manner you can write, जो आपको easy लगे. Number of buttons in one shirt 5, or you can write one shirt has 5 buttons. Simply बात कहने की ये है कि जो हमारी एक शर्ट है उसमें हमारे पास 5 buttons हैं. Now what it is asking? How many buttons would 3 shirts have? तो आप क्या लिखेंगे? Number of buttons in 3 shirts. Number of buttons in 3 shirts. अब 3 shirts में कितने बटन हो जाएंगे? अब मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था जब सेम ऑब्जेक्ट के नंबर ऑफ आइटम्स पूछेगा तो वी हैव टू डू मल्टीप्लाई. ऑब्जेक्ट सेम है, आइटम क्या है? हमारा शर्ट है और कितने हैं? 3 हैं. तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू डू सिंपली 5 into 3. What did we have to do? We have to do 5 into 3, and 5 into 3 is 15. What answer we are getting? We are getting a simple answer 50. Now number of buttons in 3 shirts, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 into 3 50, or you can write 3 shirts have. इसको आप यहाँ पे 3 shirts have भी लिख सकते हैं. Then 5 into 3 is equals to 15. Okay. तो बेटा हमने यहाँ पर से क्या सीखा? What we have learned that instead of doing repeated addition, बार बार एडिशन करने से बेटर है when they have given information about one object and they are asking related to same object but more number, then we can do multiply like this. ओके, क्या किया मैंने? नंबर ऑफ बटन्स इन वन शर्ट लिख दिया. कितने थे? 5. नंबर ऑफ बटन्स इन 3 शर्ट्स, जब वन शर्ट में 5 है तो 3 में कितने होंगे? सो 5 into 3 is 15. एंड देखिए मैंने आपको ऐसे भी दिखा दिया. इन दिस वे यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इट. ओके, so I hope that you are able to understand this question. Now one more but problem is there that I am discussing you with simply. Okay, if suppose it is given one box contains 6 apples. Okay, one box contains 6 apples. चलिए मैं इसके लिए यहाँ पे आपको डायग्राम बना देती हूँ. One box contains 6 apples. हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें कितने एप्पल्स हैं? 6 एप्पल्स हैं. 1 2 3 4 5 and 6. Okay, so one box contains, suppose it is one box and this box contains 6 apples. Now what it is asking? It is asking about the number of apples that 7 boxes have. जब एक बॉक्स में 6 एप्पल्स हैं तो 7 बॉक्सेस में कितने एप्पल्स होंगे? अब देखिए, वन बॉक्स का पता है, ज्यादा का पता करना है. वन बॉक्स में कितने एप्पल्स हैं? वन बॉक्स में 6 एप्पल्स हैं एंड दे आर आस्किंग यू फॉर 7 बॉक्सेस. वन बॉक्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी गई है, 7 बॉक्सेस के बारे में पूछ रहा है. तो व्हेन वन बॉक्स कंटेन कितने? 6 एप्पल्स. अब आपसे पूछ रहा है 7 बॉक्सेस की. सिंपल सी बात है. नाउ अब आप क्या कर सकते हैं? आइदर यू कैन मेक 7 बॉक्सेस
और हर बॉक्स में आप ऐसे 6 एप्पल्स बना लीजिए। यू कैन ट्राई दिस इन योर रफ नोटबुक कि आप ऐसे ही एक गिव आई हैव शोन यू 1 बॉक्स, आप इसी तरीके से 6 और बॉक्स बना करके टोटल 6 बॉक्स, इसको मिला करके 7 बॉक्सेस हो जाएंगे। 7 बॉक्सेस बना लीजिए और हर बॉक्स में 6 एप्पल्स ड्रॉ कर लीजिए। देन यू कैन काउंट देम, आप उसे 1 बाय 1 काउंट कर लीजिए। यू विल गेट द आंसर। बट क्या ये मेथड बहुत लॉन्ग नहीं है एंड इट टाइम टेकिंग ऑल्सो, राइट? तो हमें तो क्या करना है, वी हैव टू फाइंड इट फास्ट। हम इतनी सारी काउंटिंग क्यों करें बार बार कि हम पहले 6 काउंट करें, फिर से 6 काउंट करें, फिर से 6 काउंट करें। तो क्या है ये, दिस इज रिपीटेड एडिशन एंड वी डोंट हैव टू डू रिपीटेड एडिशन, क्योंकि जहां पे ऐसे सेम नंबर को बार बार काउंट करने की जरूरत होती है वहां पे हम क्या कर लेते हैं, देयर वी कैन डू सिंपली मल्टीप्लिकेशन। यस, तो अब देखिए, when one box contains 6 apples, now it is asking about 7 boxes. तो आप क्या करेंगे, about 7 boxes what you can do, 7 boxes contain क्या करेंगे, 1 में कितने थे 6, पूछा कितने क्या है 7, simply you can do multiplication, क्या कर देंगे 6 into 7, क्या कर देंगे 6 into 7 and 6 7s are 9। अब आ गई फिर से हमारी टेबल की बारी। तो जिन्हें टेबल्स याद होंगी दे कैन डू देम वेरी इजीली, लेकिन जिन्हें टेबल्स याद नहीं होंगी वो फिर से अटक जाएंगे। That's why I'm saying you that for doing maths the most important thing is to learn tables. Okay, now let's recite table of 6. 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36 and 6 7s are 42. 6 7s are 42. So simply 6 into 7 is 42. 42 apples. What it is? 42 apples. What answer we are getting? 42 apples. अब इन्होंने हमें बताया था 1 बॉक्स के बारे में। इन्होंने हमसे कहा था कि 1 बॉक्स में 6 एप्पल्स है और आप हमें 7 बॉक्सेस का बता दीजिए। हमने क्या किया, ठीक है, हमें 1 बॉक्स की इंफॉर्मेशन थी, 7 बॉक्सेस में भी 6 एप्पल्स थे, तो आई हैव गिवन यू चांस कि आप अपने रफ नोटबुक में 7 बॉक्सेस बनाइए, हर बॉक्स में 6 एप्पल्स ड्रॉ करिए और उन्हें काउंट करिए। यू विल गेट द सेम नंबर दैट इज 42, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, मैं इतना सारा नहीं करूंगी। आई हैव वेरी सिंपल मेथड, मुझे पता है एक आइटम के बारे में इंफॉर्मेशन दी है और ज्यादा के बारे में पूछ रहा है, और जब ऐसा होता है देन वी हैव टू डू मल्टीप्लिकेशन। सो आई हैव डन मल्टीप्लिकेशन वेरी इजीली एंड आई नो टेबल्स आल्सो, मुझे टाइम ही नहीं लगा। व्हाट आई हैव डन, 7 boxes contain 6 into 7, that is 42 apples. Okay, so students, I hope that today's video will help you in solving questions related to chapter how many times, and you will learn how to do word problem related to this chapter. I hope that you will like this video. Thank you and have a nice day ahead.